Hello, future psychologists. Welcome to Dipenism. I am Dr. Dipen Shah, and आज हम लोग psychological disorders का part 2 discuss करने वाले क्योंकि the chapter is very lengthy, so I have to split into two parts. And as board exams are approaching, तो काफी मुश्किल से टाइम निकाल के मुझे ये वीडियोस भी बनाने थे क्योंकि बहुत सारे फ्यूचर साइकोलॉजिस्ट का रिक्वेस्ट भी आ रहा था. सो आई विल मेक द बेस्ट एफर्ट कि आज ही जितने भी टॉपिक्स है जो चैप्टर नंबर 6 अभी ये पार्ट 2 है, चैप्टर 7 और 8 आज ही हम लोग फिनिश करेंगे. सो डेफिनेटली ये आपको बेनिफिशियल होगा फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स. सो लेट अस बिगिन. अब तक हम लोग ने साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में जो डिस्कस किया है कि व्हाट इज मेंटल हेल्थ, एंड उस मेंटल हेल्थ के कंटिन्यूम के एक एक्सट्रीम पे मेंटल इलनेस आएगा. दूसरा हम लोग ने डिस्कस किया था अबाउट मेंटल वेलनेस कि मेंटल वेलनेस कभी गुड बोला जाएगा, कभी पुअर बोला जाएगा. तो उसमें देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया जो इंपॉर्टेंट है जब भी हम लोग बोलते हैं कि पर्सन का मेंटल वेलनेस है. जब वो एडेप्टिव रीजनिंग रखता है, उसके साथ साथ वो कंट्रीब्यूट कर सकता है टू द सोसाइटी, तो वो सब मेंटल वेलनेस के कुछ क्वालिटीज होते हैं कि उसका जजमेंट भी करेक्ट है, डिसीजन मेकिंग स्ट्रेंथ भी अच्छा है, अपने एबिलिटीज पे उसको भरोसा भी है, एंड वो उसको अच्छे से यूटिलाइज भी कर सकता है. एंड जितना भी वर्क करेगा वो प्रोडक्टिव होगा एंड फ्रूटफुल होगा उसके लिए. और हम लोगों ने साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को क्लासिफाई करने के लिए कुछ क्राइटेरियाज दिए थे कि देयर आर सर्टेन क्राइटेरियाज जिसके बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है. इट हैज टू बी अ क्लिनिकली सिग्निफिकेंट सिंड्रोम. उसके अलावा क्लिनिकली सिग्निफिकेंट सिंड्रोम मतलब क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स होना चाहिए. फिर ऐसा कोई रिस्पॉन्स जो किसी स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में है तो दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर. साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो भी होंगे उनका प्रेजेंस काफी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होना चाहिए, तभी उसके एग्जिस्टेंस को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं. एंड कोई भी डिसऑर्डर अगर किसी तरह का डिसेबिलिटी क्रिएट कर रहा है, इम्पेयरमेंट क्रिएट कर रहा है, डिसफंक्शन क्रिएट कर रहा है तो उसको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बोला जाएगा. नाउ मेंटल डिसऑर्डर्स को क्लासिफाई करने के लिए हम लोग दो मेजर मेथड्स यूज करते हैं. दो मेजर देयर आर वी कैन कॉल इट एज बुक्स. ऐसे कुछ बुक्स है, ऐसे कुछ गाइडलाइंस हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं टू क्लासिफाई अ पर्टिकुलर डिसऑर्डर एज अ mental disorder or psychological disorder. So all disorders, be it psychological or physical, need to be classified because the treatment is directly dependent on its type and the causes. तो जैसा टाइप होगा उसके हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे. अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हम लोग ने डायग्नोज कर लिया तो हम लोग ऑब्वियसली एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स देंगे. फंगल इन्फेक्शन है तो एंटी फंगल देंगे, वायरल है तो एंटीवायरल देंगे. सो क्लासिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट. So for proper diagnosis and treatment plan, one needs to know which type or category that particular type of disorder is coming under. वो बहुत ही जरूरी है. For example, if an individual has a fever due to infection of malarial parasite, his treatment plan will be different than the individual who has fever due to typhoid. Okay, एक parasitic infection एक bacterial है. So for this purpose, classification of disorder is very essential. तो आपको classification के ऊपर पूछा तो आप लोग मलेरिया टाइफाइड को नहीं एक्सप्लेन करोगे तो भी चलेगा, आपको सिर्फ इतना चेक करना है. Classification is important for diagnosis and correct treatment. For physical disorders, the classification is mainly based on the root cause. के cause क्या है उसके हिसाब से हम लोग classify कर देंगे. That is etiology. Etiology मतलब causative agent. Unfortunately, the causes for various psychological disorders are explained differently by various perspectives and theories in psychology. तो हर डिसऑर्डर के लिए बहुत सारे थियरीज सजेस्ट किए थे. तो बेसिकली कॉज होते हैं मल्टीफैक्टोरियल. तो हम लोग एक कॉज को पिन पॉइंट नहीं कर पाते, इसीलिए ट्रीटमेंट मोडालिटीज भी बहुत ही अलग अलग टाइप के होंगे. तो कुछ कॉजेस होते हैं, जेनेटिक कॉजेस हो सकते हैं, एनवायरमेंटल हो सकते हैं, बायोलॉजिकल कॉजेस हो सकते हैं. तो ये बहुत सारे डिफरेंट कॉजेस को आइडेंटिफाई करना काफी बार डिफिकल्ट हो जाता है. So that is why more research is needed for this. Moreover, we have just studied the criteria for the abnormal behavior, where you might have noticed that there is no reference of etiology or causative factors. Abnormal behavior हम लोग सिर्फ classify करते हैं कि ये normal है, ये abnormal है. But वो abnormal behavior क्यों कोई किसी में exist करता है उसको हम लोग इतना अच्छे से define नहीं कर पाते. हर इंसान अलग अलग सिचुएशन में अलग तरह से बिहेव करता है, वो अलग तरह से फील करता है, और फील क्यों करते हैं अलग तरह से सोचता है. सो यहाँ पे भी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी आ जाता है. सो द मेन एम्फेसिस इज ऑन द क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स और सिंड्रोम्स. एक हमने क्राइटेरिया पढ़ा था, clinically significant syndrome, that is cluster of symptoms. So classification of mental disorders keeps changing. Nevertheless, attempts are made to make the classification more and more scientific. Scientific approach is necessary जहाँ पे evidences होने चाहिए.
Psychological disorders are of many types and categories. Presently there are only two major systems. जो मैंने बोला दो मेजर हम लोग गाइडलाइंस फॉलो करते हैं तो क्लासिफाई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, एक तो है डीएसएम और एक है आईसीडी. सो मेनली क्लासिफिकेशन में आपको डीएसएम एंड आईसीडी को अच्छे से एक्सप्लेन करना है. डीएसएम इज डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल फॉर मेंटल डिसऑर्डर्स जो अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने पब्लिश किया है, एंड आईसीडी दैट इज इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस एंड रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स जो पब्लिश किया है थ्रू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. सो एज पर DSM, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल फॉर मेंटल डिसऑर्डर्स, आपको फुल फॉर्म पूरा याद रखना है, शायद से 1 मार्क के लिए फुल फॉर्म भी पूछा जाए या एमसीक्यू में पूछा जाए. इस क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स published by APA, that is American Psychiatric Association. So DSM is recognized and published by APA. It is mainly used to ensure uniformity of diagnosis by mental health professionals. Its first version was published in the year 1952. So 52 में first version आया था, that is DSM-1, and subsequently revised periodically. The present version of it is DSM-5, which was introduced in 2013. So first time 52 में, और उसके बाद बहुत सारे versions आ गए जिसमें से अभी DSM-5 is the latest one जो 2013 में आया, जिसमें total 22 broad categories है of mental disorders with subcategories. तो ये information आपको DSM के बारे में याद रखना है. ICD, International Classification of Diseases and Related Problems, it is created by WHO, that is World Health Organization, for documenting all different types of diagnosis, diseases, signs and symptoms, and social circumstances. It contains a section on psychological disorders also, and the latest 11th version of ICD was presented in 2019. And according to ICD-11, there are 19 categories. 2019 or 19 याद रखना है, broad categories of mental disorders, most of which overlap with DSM-5 also. It is not possible to study all these categories of disorders in this chapter itself, so we'll only discuss few disorders. So almost 6 categories of disorders है, जैसे कि anxiety disorders है, stress related disorders है, depression है, bipolar है, then substance abuse के disorders है, and एक personality डिसऑर्डर भी है, दैट इज स्किज़ोफ्रेनिया. तो ये 6 मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का डिस्कशन हम लोग करेंगे. हर एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन या लॉन्ग आंसर भी हो सकता है. नाउ आपको आईसीडी और डीएसएम के बीच में डिस्टिंग्विश याद रखना है. तो डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स क्या है? डीएसएम और आईसीडी के बीच में डीएसएम के 5 वर्जन्स आए, आईसीडी के 11 आए. डीएसएम फर्स्ट आया था 1952 में. ये फर्स्ट कब आया था वो दिया नहीं है, बट उसका लेटेस्ट वर्जन जो आया था वो था 2013 में. ICD latest आया 2019. As per DSM, there are 22 broad categories of mental disorders, and as per ICD, there are 19 broad categories. DSM published किया by American Psychiatric Association, ICD by WHO. तो ये APA ने दिया, ये WHO ने दिया. तो DSM और ICD के बीच में distinguish भी आ सकते हैं. तो मैंने कुछ points दे दिए. आप लोग definitely अपने text में side में ये distinguish table बना लेना. So let us discuss now major psychological disorders. First category जो है that is anxiety disorders. और उसका एक case study दिया हुआ है. Case study तो आपको पता है, ये in-depth analysis. One day Hema was driving back home from her office. Suddenly she felt her heartbeats were increasing. She felt breathless and was perspiring profusely. She felt so scared that she stopped the car and got out of it immediately. This continued for many days, and the frequency of such experiences kept on increasing. Due to this, she started getting scared of driving in heavy traffic. If she was driving in heavy traffic, she felt as if she would die. As a result, she completely stopped driving the car. After a period of time, she even stopped stepping out of the house. Frequently, she started getting crying spells. She was diagnosed as suffering from anxiety disorder. नाउ आप लोग समझ सकते हैं कि ये हिमा को जो पूरा केस स्टडी दिया है, कहीं पे भी मेंशन नहीं किया कि व्हाट वाज द कॉज. जब कोई पर्टिकुलर सिचुएशन में हम लोग एंग्शियस फील कर रहे, वरी फील करें और हम लोग ट्रबल्ड फील करें और हम लोग को उसका रीजन नहीं पता, तो दैट इज कॉल्ड एज एंजाइटी. स्ट्रेस में तो हमेशा एक स्ट्रेसर प्रेजेंट होता है, तो वी कैन पिन पॉइंट ये स्ट्रेसर है, इसके लिए स्ट्रेस है. बट समटाइम्स एंजाइटी में हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि क्या रीजन है हमारे वरी का. तो सेम हिमा के साथ हो रहा है, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही और उसकी वजह से उसके सिचुएशन में और इम्पैक्ट बढ़ते ही जा रहा है. एंड इट कंटिन्यूड फॉर मेनी डेज. तो किसी डिसऑर्डर को क्लासिफाई करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन भी इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे. तो एंजाइटी डिसऑर्डर्स के बारे में अगर मेंशन किया तो फर्स्ट पॉइंट आपको मेंशन करना है
The word anxiety is derived from Latin word anxietas, which means troubled mind. Troubled mind या uneasy feel करना. तो most important point is troubled mind. आप लोग first point mention करोगे. जो भी type का anxiety disorder होगा, एक तो generalized anxiety disorder है और एक phobia का discussion है. तो first आप लोग anxiety का definition लिखोगे. Now definition: when a person feels nervous or worried without any obvious reason for a long time, such that it starts interfering with the daily life, is called as anxiety disorder. So आपको definition memorize करना है. जब कोई person worrisome feel करे without any obvious reason and it is continued for a long time, such that it interferes with the daily life, उसके डेली के काम काज में अगर इम्पैक्ट करने लगे तो हम लोग एंजाइटी डिसऑर्डर फील बोलेंगे. अदरवाइज एंजाइटी तो हम लोग डेली लाइफ में फील कर सकते हैं काफी बार, बट अगर ये लॉन्ग टाइम तक परसिस्ट करता है और इंटरफियर करने लगे, अगर पर्सन का क्लैरिटी नहीं है, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है, डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहा है, तो एंजाइटी डिसऑर्डर है. There is many sub varieties of anxiety disorders, but we mainly studied two major anxiety in this chapter, that is GAD, generalized anxiety disorder, and phobia. So दोनों इंपॉर्टेंट है. जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर नाम से पता चलता है जनरली हर चीजों से वो पर्सन को एंजाइटी होने लगती है. तो इनिशियली बहुत स्लो डेवलप होगा, बट अचानक से बहुत सारी चीजों में उसको ऐसे साइन एंड सिम्टम्स देखने मिल जाएंगे. सो इनिशियल स्टेज पे ना मैनेज किया जाए तो पर्सन एंजाइटी में प्रोग्रेस कर जाए और जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर हो जाए. सो यहाँ पे मेंशन किया, वी ऑल फील टेंस्ड इन आवर डेली लाइफ ड्यू टू वेरियस रीजंस, दैट इज ड्यूरिंग एग्जाम्स, व्हाइल स्पीकिंग इन पब्लिक, एक्सेट्रा. And it is sometimes beneficial to experience mild tension, because mild tension create करता है alertness while shouldering responsibilities or while facing a difficult situation. It compels us to face difficulty in a systematic and planned manner. So that is very natural. अभी आपका एग्जाम्स आ रहा है, आप लोग anxious फील कर रहे हो, आप लोग थोड़ा नर्वस फील कर रहे हो, आप लोग थोड़ा टेंस्ड हो, that is okay. इसीलिए आप लोग एफर्ट्स तो ले रहे हो. ऐसा नहीं कि अरे एग्जाम आ रहा है और आप लोग कुछ एक्टिविटी ही ना करो. That means anxiety has overpowered. But if you manage it well, you take certain steps in order to manage your anxiety. तो आप लोग अभी वीडियो देख रहे हो, आप लोग कुछ नोट्स बनाओगे, आप लोग कुछ समरी बनाओगे, बार-बार रिवाइज करोगे. So that is taking steps in the direction for finding a solution. That means you are coping up with your anxiety. That is not a disorder. But instead of mild or moderate tension, if it becomes too intense and it starts interfering with our daily routine as well as our work performance, then it is a disorder. जो definition में mentioned था. We start feeling tense or nervous without any reason, without obvious reason. We start avoiding people and are unable to perform daily routines also. Sometimes हम लोग people को भी avoid करना शुरू कर दे. काफी बार friends हो या ऐसे कुछ colleagues हो, हम लोग avoid करें. So that is all signs of anxiety. So to diagnose any individual suffering from this disorder, the symptoms should be present for at least 4 weeks for children. 4 weeks मतलब 1 महीने तक अगर बच्चों में तो एंजाइटी बोल देंगे. एडल्ट्स का कोपिंग एबिलिटी ज्यादा होता है तो उनका टाइम पीरियड है 6 मंथ्स. अगर 6 मंथ्स तक कंटिन्यूअस कोई पर्सन ये सब सिम्टम्स फील करे तो डायग्नोस होगा एंजाइटी डिसऑर्डर. और बच्चों के केस में 1 महीना ही काफी, क्योंकि द माइंड ऑफ अ चाइल्ड इज वेरी सेंसिटिव, इट इज वेरी डेलिकेट. तो छोटी सी बात का भी उनपे बहुत जल्दी इंपैक्ट पड़ जाता है, जबकि adult life में 6 months is a criteria. तो जैसे मैंने बताया था, duration is going to be important point in your answer. So point wise लिखोगे तो first point हो जाएगा definition. दूसरा point ये duration को पहले mention कर रहा हूँ. तीसरा sign and symptoms जो ऊपर वाले पैराग्राफ में दिया उससे better नीचे sign and symptoms दिए हुए. Due to extreme nervousness, his capacity to solve problems may break down. Of course, as we have already seen, there is not just one criteria to be fulfilled for diagnosis of any disorder. So consultation of the expert is essential. तो expert ही बता पाएंगे अगर ये sign and symptoms cluster में है या नहीं है. So that's say कि extreme fear of the unknown. Fear है, anxiety है, but without any obvious reason, unknown. Increased heartbeat, जैसे वो हिमा के केस में था. Irritability, frequent headaches होना, frequent worry, lack of sleep, insomnia, नींद ना आना, sensation of vomiting, uneasiness, breathlessness, blackouts. उसके अलावा avoiding people ये हो सकता है. फिर affecting the daily work life, तो ये सब symptoms जो होंगे, that is definitely confirming the diagnosis of anxiety disorders. फिर ट्रीटमेंट वगैरह का कुछ सजेशन नहीं किया. ट्रीटमेंट आगे बाद में आएगा कि मेंटल डिसऑर्डर्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो आगे के चैप्टर्स में मेंशन किया गया है कि माइंडफुलनेस टेक्निक, मेडिटेशन हो गया, ये सब कर सकते हैं. देन कम्स फोबिक डिसऑर्डर. Ninad went for his college picnic. From the top of a hill, when he looked down, he felt an unexplained fear. ऐसा डर जो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्यों इतना फियर एक्सप्लेन कर रहा हो रहा है उसको. Few days later, when he went to his uncle's house and looked down from 15th floor, he experienced the same fear.
Therefore, he noticed the same fear. Thereafter, he noticed the same fear whenever he looked down from certain height. He realized that his fear is not normal, and these are symptoms of acrophobia. Acro मतलब distant पे, away, कहीं पे है और उससे fear हो रहा है, height का fear हो रहा है. So that is the phobia. So phobia मतलब irrational fear. काफी बार कुछ unknown reasons से कोई person fearful होता है. Definitely sometimes कुछ past experience भी associated होता है, but काफी बार ना भी हो तो भी उसको डर महसूस होता है. So the word phobia is derived from phobos, the name of a Greek god of fear. So Greek god of fear भी होता है. So that is for phobos. We all are afraid of something or other, and we normally are able to overcome it with little efforts. But even when something or some situations are either less dangerous or not dangerous at all, and if an individual is intensely afraid of it, and that creates problems and adjustments in daily life, then the fear is called as phobia. For example, heights, water, darkness, dogs. कितने लोगों को dogs का fear होता है, but वो manage फिर भी कर लेते. वो लोग वेट करेंगे कि हाँ वो गली से वो डॉग चला जाए तो मैं निकल जाऊं, या बिस्किट लेके जाओ, या हाथ में कुछ स्टिक वगैरह रखा. सो दे आर एबल टू मैनेज इट. बट अगर कोई मैनेज ही नहीं कर पा रहा इस फियर को, इट अफेक्ट्स द एडजस्टमेंट ऑफ द पर्सन इन डेली लाइफ. देन इट इज कॉल्ड एज फोबिया. या फोबिया ऑफ कॉकरोच, बीइंग अलोन, ब्लड, क्राउड, एलिवेटर एक्सेट्रा. अलग अलग चीजों के फोबिया लोगों में डेवलप हो सकते हैं. This individuals then try to avoid it at any cost. If it starts interfering with his or her daily life and creates adjustment problem for more than 6 months, that is called as phobia. So जैसे generalized anxiety disorder में यही same duration था 6 months, for adults यही same for phobia के लिए भी. Children में वहाँ पे 4 weeks था, यहाँ पे mention नहीं किया, यहाँ पे in general बोला 6 months. In short, phobia अभी definition आ रहा है, is an intense and irrational fear of some objects or situations. तो आप लोग फर्स्ट पॉइंट मेंशन करोगे, फोबिया इज एन इंटेंस एंड इरेशनल फियर ऑफ सम ऑब्जेक्ट. सेकंड पॉइंट, इट इज derived from the word phobos, which means the Greek god of fear. Third point, duration. If it exists for more than 6 months and interferes with the daily life, then it is called as a phobia. Example आपको मेंशन करना है, specific phobia, social phobia, agoraphobia. Agoraphobia is of a particular situation. तो particular situation में जाने से या particular place में जाने से डरने लगता है इंसान. तो ये सब अलग अलग टाइप के फोबियाज होते हैं. तो आपको और कोई ट्रीटमेंट वगैरह सजेस्ट नहीं करना, सिर्फ ये दो एंजाइटी डिसऑर्डर्स को मेंशन करना, जनरलाइज्ड एंड फोबिया. कमिंग नेक्स्ट इज द डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स. Vinita is 35-year-old working lady having 2 children. Except for earlier few years of marriage, she had disturbed married life due to constant quarrels over small issues with the husband, and it resulted in a divorce and which she was totally unprepared for. As a result, she became very disappointed and lost all hope, hopeless hona. Started feeling lonely, isolated, frustrated, stressed, and started blaming herself for the divorce. So self-blaming shuru ho gaya. The stress of financial crisis and children's education led to disturbances of sleep. She also started experiencing frequent health complaints. She was feeling sad all the time, and these are the symptoms of depressive disorders. So in total population, 5 to 6% of people suffer from mild depression due to some negative incidences or some other external factors that the individual may experience negative feelings. But if it continues for a very long time, then it is called as a depressive disorder. So कोई negative influence हुआ है, incidents हुआ है, other external factors, the individual may experience negative feelings. That is natural. But अगर ये continue for a long duration, that is called as a depressive disorder. And there are feelings of hopelessness, anxiety and sadness along with guilt. तो याद रखना has guilt. ये symptoms आपको याद रखने हैं. तो there is hopelessness, hopeful नहीं है person, anxiety है, sadness है और extreme guilt है. These are the major feelings experienced in this disorder. And काफी बार ये सोसाइटी में स्टिग्मा है, लोग खुल के बता नहीं पाते कि I am having this problem that I am feeling very hopeless in life और मुझे anxiety है. तो ये सब काफी बार लोग कम्युनिकेट नहीं करते. तो स्टिग्मा भी है सोसाइटी में, और हम लोग ने ऐसे केसेस भी देखे, सेलिब्रिटी में भी रिसेंट ईयर्स में हमने देखे कि उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया बिकॉज दे आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन एंड दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद समवन. दे डोंट फील कि कोई सपोर्ट सिस्टम है. तो थोड़ा उनको भी इनिशिएटिव लेना जरूरी हो जाता है, बट वो नहीं ले पाते. सो बीइंग अ फ्रेंड, अ कलीग, अ फैमिली मेंबर, यू शुड टेक द इनिशिएटिव एंड टॉक टू सच पीपल जो ऐसा कुछ है. And not being ashamed, I have myself experienced depressive episode जहाँ पे मैं almost for 5 months I took the therapy which helped me to cope up with the depressive episode. और
वो मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, वेयर आई रियलाइज कि साइकोलॉजी कितना हेल्प कर सकता है, एंड दैट इज वेयर आई इंक्लाइंड, माय इंक्लिनेशन टुवर्ड्स साइकोलॉजी इंक्रीज्ड। आई हैड ग्रेट फेथ, इमेंस फेथ। सो ये बहुत जरूरी है कि ये चीज हम लोग ओपनली शेयर करें। एक चीज आपको याद रखना है कि काफी बार हम लोग बोलते हैं यार मैं बहुत डिप्रेसिंग फील कर रहा हूं, बट एक्चुअली दैट इज नॉट अ डिप्रेशन, दैट इज फीलिंग लो मूड। सो डिप्रेशन तभी बोला जाता है जब भी अगेन सिम्टम्स लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए एग्जिस्ट करते हो, तभी डिप्रेसिव एपिसोड बोला जाता है। So the disorder in which the individual experiences extreme feeling of sadness as well as guilt for at least 2 weeks, it is called as depressive disorder. आप लोगों को ये ऑब्जर्व करना है, एंजाइटी के लिए 6 मंथ्स का ड्यूरेशन था, बट डिप्रेशन के लिए अगर 2 हफ्ते भी पेशेंट को है तो उसको डिप्रेसिव एपिसोड बोल सकते हैं, क्योंकि ये काफी सीवियर फॉर्म ऑफ मेंटल डिसऑर्डर हो गया। अगर पर्सन को इमीडिएटली हेल्प ना मिले तो ये जो डिप्रेसिव फेज है ये और डेप्थ में जाएगा। पर्सन बहुत ही द पर्सन विल फील extremely isolated and it's a very difficult phase because I myself shared this feeling of mine on YouTube, जहाँ पे मैंने शेयर किया था कि initially वो depressive phase नहीं था, but later on it became a depressive phase, and the reason for sharing is so that more and more people can feel you're not alone. There are so many people who feel similar kind of experience, and definitely the knowledge of psychology, there are self-help books, you can always communicate with me as well, you can contact me, and definitely sharing will help you to maybe reduce the intensity of the pain. That will help. Coming to the symptoms, क्योंकि आप लोग फ्यूचर साइकोलॉजिस्ट बन रहे हैं, इसके लिए मैं एक इमोशनल तरह से भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बिकॉज ये सिर्फ एग्जाम पास होने के लिए नहीं, दिस नॉलेज हैज टू बी वैल्यूएबल फॉर यू, so that is why I'm giving my valuable time to all of you. Symptoms, feeling of hopelessness, मैंने already symptoms बता दिए, has guilt, तो hopelessness आ गया, फिर एंजाइटी कहीं पे मेंशन नहीं किया बट फीलिंग ऑफ गिल्ट आ गया, हैज गिल्ट, फिर एक्सट्रीम सैडनेस कहीं पे मेंशन किया है, देखते में आ जाएगा, लैक ऑफ एंथुसियाज्म, एनर्जी लेवल कम हो गया, वेट लॉस, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन फूड एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, इसी वजह से वेट लॉस भी होगा, और ऐसे एक्टिविटीज जिससे मजा आता था वो करना बंद कर दिया, प्लेजर गिविंग एक्टिविटीज आर स्टॉप, ईदर लैक ऑफ स्लीप और एक्सेसिव स्लीप, constant feeling of fatigue, tiredness, sadness आ गया, hopelessness आ गया, anxiety, sadness, guilt, sad feeling, excessive feeling of guilt over some matter, sexual dysfunction, suicidal thoughts आना, और काफी बार कुछ लोग commit भी कर लेते suicide, inability to concentrate, indecisiveness, etc. are found in the individual suffering from depressive disorder. तो ये cluster of symptoms होने चाहिए कितने टाइम के लिए? If 2 weeks के लिए है at least, then depressive disorder बोल सकते हैं. Then next is bipolar disorder. Now bipolar जैसे दो एक्सट्रीम पोल्स हैं, उसमें एक पोल पे पर्सन को होगा मेनिया और एक पोल पे एकदम ऑपोजिट चीज हो रही है, डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब क्या कि पर्सन फील कर रहा है लो मूड, और मेनिया मतलब वो हाई ऑन एनर्जी, अचानक ही अननेसेसरी रीजन से हाई ऑन एनर्जी है। हम लोग बोलते हैं ना किसी चीज का क्रेज है, मेनिया क्रिएट हुआ है, तो यहाँ पे अगर पर्सन को एक एक्सट्रीम मेनिया हो रहा है, ऑल्टरनेट डिप्रेशन, वापस से मेनिया, डिप्रेशन तो ऑल्टरनेट अगर होता है तो इसको हम लोग बोल देते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। तो दो एक्सट्रीम पोल्स के इवेंट्स पर्सन के लाइफ में आ रहे हैं, which is also called as manic depressive disorder. So mania and depression का combination, manic depressive is bipolar. In this disorder, the individual experiences alternate phases of extreme sadness, hopelessness, stress at one time, मतलब depression के symptoms, and extreme happiness, enthusiasm and elation at other times. अचानक ही हवा में उड़ने लगता है और कभी एकदम मायूस, उदास. In the same individual, you can see these opposite conditions one after the other. That is why it is called as manic depressive disorder. That is bipolar. The individual experiences alternate phase of the two states. वही symptoms में लिखना है. One in which the individual is extremely happy, excited, and elated, and in the other he experiences sad, stress, losing hope, things unrealistically, gets irritable or aggressive. तो जो ऊपर explain किया है वही symptoms बना के वापस explain करना है कि दो extreme opposite feelings या state individual experience करेगा. Causes कुछ mention किए, genetic factors, imbalance in the neurotransmitters in the brain, क्योंकि कुछ neurotransmitters excitatory होते, कुछ inhibitory होते, mainly norepinephrine, serotonin and dopamine are found to be the main positive factors. In fact, आप सभी लोगों को मेरा और एक वीडियो देखना चाहिए, obviously आपके बोर्ड एग्जाम्स खत्म होने के बाद, dose for happiness, जहाँ मैंने डिस्कस किया ये चारों न्यूरोट्रांसमीटर्स या ये चारों केमिकल्स कैसे हमारे बॉडी में बढ़ाया जाए जिससे हम लोग हेल्दी फंक्शन करें. तो उसमें डी से है डोपामिन, एस से है सेरोटोनिन, ई से है एंडोर्फिन्स और ओ से ऑक्सीटोसिन. तो
नॉरएपिनेफ्रिन भी जरूरी है, और ये 4 तो इंपॉर्टेंट है, ये हैप्पी हार्मोन से कैसे इसको बढ़ाया जाए उसका टेक्निक मैंने डिस्कस किया है। तो बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया। देन कैटेगरी नंबर 4 ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर। काफी बार इंडिविजुअल के लाइफ में ऐसा कोई इवेंट होता है कि वो उसको भुला ही नहीं भूलता, और उसका इम्पैक्ट उस हिसाब से हो जाता है कि वो उस सिचुएशन से डरता है, या उस सिचुएशन से मिलता जुलता कोई सिचुएशन है तो उसको फ्लैशबैक्स होने लगते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं काफी बार पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसके लिए बता रहा हूँ सो दैट आप लोग पर्सनल रिस्पॉन्स आंसर भी इस पे ऐड कर सको। बहुत साल पहले मुंबई में केस हुआ था, ट्रेन के बॉम्ब ब्लास्ट, सीवियर बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, और जो लोगों ने वो देखा हो और सुना हो, एक्सपीरियंस किया, उन लोग के माइंड में इतना बड़ा फियर बैठ गया, दे स्टॉप्ड ट्रैवलिंग। ये इतना फियर बढ़ गया, एंड दे नीडेड दैट साइकोलॉजिकल हेल्प जिससे उस ट्रॉमा से बाहर आ पाए। सो दैट इज कॉल्ड एज पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। सो व्हेन एन इंडिविजुअल इज नॉट एबल टू कोप अप विद द एग्जिस्टिंग सिचुएशन, he tends to experience stress or tension. So during daily problems encountered due to fast-paced life, relationship issues, loneliness, lack of proper adjustment, lack of enough personal space, time constraints, consumerism, frustration due to non-fulfillment of desires, addiction, prolonged physical illness, constant feeling of uncertainty, family problems, cutthroat competition are all causative factors for stress. मतलब इन सबको बोला है stressors. तो competition बोल लो, लव लाइफ बोल लो, रिलेशनशिप ले लो, एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे, एडिक्शन हो गया, ये सब चीज आर स्ट्रेसेस। स्ट्रेस और टेंशन इज इनएविटेबल इन लाइफ, ये तो पार्ट ऑफ आवर लाइफ है। इफ इट इज इन मॉडरेट इंटेंसिटी, इट अपीयर्स टू बी यूजफुल बाय प्रोवाइडिंग मोटिवेशन टू द इंडिविजुअल कि हम लोग कैसे उसमें से बाहर निकले और कैसे अपने आप को और अच्छे से डेवलप करें। बट इफ द इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस इंटेंस स्ट्रेस, then his or capacities to deal with it gets imbalanced. So अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया तब प्रॉब्लम होगा। फॉर एग्जांपल वॉर कंडीशन, सीरियस एक्सीडेंट, जो मैंने अभी केस बताया बॉम्ब ब्लास्ट का, इट्स काइंड ऑफ एन सीरियस एक्सीडेंट दैट द पर्सन हैज मेट विद, डेथ ऑफ अ लव्ड वन, natural disasters, divorce, sexual abuse, breakup in relationship, etc. are the conditions that can create deep impact on the life of the individual and may be responsible for illness like stress disorder. तो ये स्ट्रेस डिसऑर्डर जो है ये पोस्ट ट्रॉमेटिक काफी बार होते हैं। तो ये स्ट्रेस डिसऑर्डर क्यों आया है? बिकॉज ऑफ सम इवेंट्स व्हिच आर एक्सट्रीमली नेगेटिव। तो चाहे वो किसी के लाइफ में रेप इवेंट हो, या बॉम्ब ब्लास्ट हो, एक्सीडेंट हो, वॉर कंडीशन हो, डेथ हो, ये सब स्ट्रेस डिसऑर्डर में आएगा। आउट ऑफ मेनी टाइप्स वी आर स्टडीइंग टू टाइप्स, दैट इज ASD, acute stress disorder, और PTSD जिसके बारे में बार-बार बात कर रहा हूं, पोस्ट ट्रॉमेटिक। फर्क सिर्फ इतना ही है, दैट इज ऑफ ड्यूरेशन। सो ड्यूरेशन दोनों में डिफरेंट रहेगा, अक्यूट में, पोस्ट ट्रॉमेटिक। एक यहाँ पे केस स्टडी दिया है, 39-year-old Vinesh is a working man and was staying with wife and 2 children. One night while returning from work, he was surrounded by few gangsters, was beaten ruthlessly. They snatched away all his belongings and threatened to kill him. He started begging for his life. They tied him to an electric pole, tortured him physically, and left. After a long time, somehow Vinesh managed to rescue himself and went to the police station. 3 days later, he started getting nightmares, started getting illusions, was extremely scared, and most of the time started getting flashbacks of the incidents again and again. Could not sleep well and felt extremely frustrated. Or not only that, he could not concentrate on work. He was diagnosed as suffering from ASD. अभी ASD PTSD में convert हो जाएगा अगर ये symptoms विनेश को continue। If an individual with age 6 years or greater has experienced or witnessed extreme situations like death of a loved one, serious physical injury, natural disasters, sexual abuse like rape, etc., he or she experiences extreme fear, emotional numbness, कुछ भी महसूस ना कर पाना, severe confusions, gets dreams of the incident or gets uncontrollable thoughts about it, is not able to concentrate, not able to sleep, experiences severe guilt about the event, and holds himself responsible and goes into depression. He or she becomes irritable. His or her emotional world becomes unstable, numb. He prefers to stay alone, does not take help of others. Up to 3 days after the traumatic experience, such reactions are diagnosed as a stress disorder, as they are considered as normal reaction to extremely painful incidents. So up to 3 days, it's normal. अगर किसी के साथ इतना बुरा हादसा हुआ है तो डेफिनेटली कोई ऐसा इमीडिएटली तो बाहर नहीं निकल पाए। But if the situation lasts for more than 3 days and up to 4 weeks,
and persists beyond that period, then it is called as acute stress disorder. So 3 दिन से 4 हफ्ते मतलब 1 महीने तक रहता है तो हम लोग इसको बोलते हैं acute stress disorder. PTSD. You have just learned about the symptoms of acute stress disorder. If these symptoms continue for more than 1 month, तो 3 दिन से 1 महीना ASD. अगर 1 महीने से ज्यादा हुआ with the same intensity without much improvement, the individual is diagnosed as suffering from PTSD, post-traumatic stress disorder. If in the above example, if Vinesh continues to experience ASD beyond 1 month, he would be diagnosed as suffering from PTSD. An individual who has suffered trauma normally goes through 3 stages. जहाँ पे first stage is shock stage, second is suggestible stage, and third जो है that is the recovery stage. तो 3 stages है SSR. Shock stage में the individual in this stage is extremely disturbed and is not able to think anything. He is in shock. तो shock stage तो काफी बार ऐसा होता है किसी का डेथ हो जाता है तो हमने देखा है कुछ लोग एकदम गुमसुम हो जाते हैं, चुप बैठते हैं और उनको बोलते हैं कि इनको ये जो बॉडी है, जो उनके लव्ड वन की बॉडी है वो दिखाया जाए, वो रोल है वो बाहर निकाले, वो शॉक से बाहर निकलना है, शॉक नहीं तो अदरवाइज कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर द पर्सन. Then suggestible stage. In this stage, the individual tries to find out how to get out of these circumstances by asking others or seeking guidance. In this stage, the individual gets extra sensitive towards suggestions given by others to the extent that he may accept any suggestion without thinking over its consequences. तो कोई कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाता है और उसको बस एक सपोर्ट चाहिए रहता है. तो कुछ लोग बोलते हैं तू यार भगवान में बिलीव कर, तो कोशिश कर भगवान में बिलीव करे. कुछ लोग बोले तू जाप कर, या कुछ लोग बोले तू यहाँ पे ये बाबा के पास चले जा, वो आत्मा को बुलाएंगे. तो कोई कुछ भी सजेशन एक्सेप्ट कर लेता है बिकॉज द पर्सन इज इन ट्रॉमा, द पर्सन इज नॉट एबल टू थिंक रैशनली, इज टोटली डिस्टर्ब. सजेस्टेबल स्टेज में नियर वंस क्लोज्ड वंस का होना बहुत जरूरी है, सही सजेशन दे और उनको इस ट्रॉमा में से बाहर निकालें. रिकवरी स्टेज, though the individual is still under stress but has started regaining his mental balance, he or she is trying to get out of the situation and shows signs of recovery. So shock, suggestible and recovery stage. However, some individuals still cannot maintain their mental balance and start showing signs of mental illness, that is post-traumatic stress disorder, PTSD. Continues. The next disorder is substance-related and addictive disorders. Mohan is a 20-year-old postgraduate student. He lives at home with his parents and elder sister, Payal. Mohan's father is an alcoholic. He feels that everyone in his family pampers Payal and ignores him. He feels very neglected at home because of that. One day, his friends invite him for a party where alcohol is being served. At the party, he consumed alcohol for the first time and liked it. Gradually, he started drinking regularly. And even after joining work, he continued to drink. Sometimes he would go to work in a drunken state, very bad. His performance at work started declining. He couldn't stay without alcohol. There is an indication of addiction. तो addiction कोई chemical substance का हो सकता है, addiction कोई particular behavior का हो सकता है. जैसे किसी को addiction खाने पीने की चीजों का और tobacco का addiction हो, किसी को addiction porn का addiction हो सकता है, किसी को gaming का addiction होता है. तो हर अलग अलग चीज का अगर constant habit बन जाए, that habit which creates dependency is called as addiction. Since ancient times, human beings made use of the juice of various herbs as a means to increase strength or enthusiasm to reduce pain or sadness. These herbs are also used for experience of euphoria, drowsiness, ecstasy, and high or kick. At present, apart from these natural derivatives, there are a number of synthetic chemicals that can be used for the same purpose. After taking addictive substances like opium, charas or hashish, ganja or marijuana, heroin, etc. for several times, the person gets habituated to it. So मैंने जो बताया habit forming, which develops dependence, is called addiction. To the extent that he cannot stay without it, is called as drug addiction. तो आप लोग definition लिख देना. Habit which creates dependency is called as addiction. It can be drug addiction, porn addiction, gaming addiction, etc. The addict may go to the extent of stealing, begging or borrowing money, and at times may not hesitate to kill someone to get money to buy the addictive substances. Because उसका dependence इतना strong हो गया. His or her physical, mental, social and moral health is affected. His or her family life breaks down. Financial situations deteriorate and he is not able to focus. Due to continuous and long-term consumption of addictive substances, he develops physical dependence यहाँ पे आ गया on it and may even die due to overdosage of drugs. If he tries to either reduce the dose or tries to stop the drugs, then withdrawal symptoms are created. Withdrawal symptoms बहुत ही difficult होते हैं.
कोप अप करना, इसके लिए रिहेबिलिटेशन कैंप में भेजा जाता है या हॉस्पिटल में विड्रॉल का प्रोसेस किया जाता है. Withdrawal symptoms are very painful and creates a threat to his life. Experiences like tremors, losses control over body movements, and may even die. तो ये सब symptoms, ये सब withdrawal symptoms. Symptoms: excessive consumption of the drugs or alcohol, inability to reduce the dosage, intoxicated the whole day, desire to consume the substances again and again, reduction in the social context with the friends, continued consumption even during physical illness or when it is contradicted, increase the dose to get the same effects, etc. Some of the symptoms of drug addiction. So inability, daily life, social life, physical illness भी रहेगा तो भी इंसान वो consume करेगा, etc. Alcoholic Anonymous is the organization that helps an alcoholic to get rid of the habit of consuming alcohol. There are two groups. One consists of present alcoholic, while second includes ex-alcoholic. An alcoholic explains to the addict how his or her life can improve if he or she gets out of his or her addiction, and thus provides the emotional support. In this way, the ex-alcoholic encourages an alcoholic to get out of dependence on alcohol. तो एक alcoholic जो emotional support देगा और ex-alcoholic वो अपना experience share करेगा कैसे you can get out of the dependence. Last psychological disorder is schizophrenia. Ronnie, a 20-year-old youth, joined firm after completion of his graduation. Soon he became popular as a hardworking and enthusiastic person, but he did not like to intermingle with his co-workers. In few days, people started noticing the changes in him. He started remaining absent from the work. At home too, he remained quiet most of the time. He started experiencing hallucinations. He started feeling as if someone is following him. He started talking to himself and was extremely apathetic. Apathetic matlab feel na kar pana. He constantly felt that someone is talking about him and criticizing him, and as if someone is planning to kill him. He was diagnosed as suffering from schizophrenia. So यहाँ पे person को delusions होते हैं, ऐसा लगता है कोई उससे बात कर रहा है, hallucinations होते हैं, ये सब symptoms हो गए schizophrenia. In 1911, a Swiss psychologist called Eugene Bleuler used the term schizophrenia for the first time. The term schizophrenia is made up of two terms: sezin, that is split; friend means mind. The person is in split mind. So split mind is the meaning. This disorder is not easily seen among children, but mainly starts in adolescence to young adulthood. In comparison to females, it is found more frequently among males. जैसे आप लोगों ने कुछ एग्जांपल पढ़ा था delusion का. Delusion जो आप लोगों ने देखा रहेगा मुन्ना भाई में, उसको गांधी जी दिखते हैं. So that is a delusion. That is not schizophrenia. Schizophrenia तब बोला जाएगा जब उसको और hallucinations हो, delusions हो, और language, thoughts, emotions में भी impact आए, और उसको usually auditory hallucination होना शुरू हो जाता है. वहां पे उसको visual hallucination था. That may or may not be schizophrenia, जो मुन्ना भाई में दिखा है. Schizophrenia is a major disorder involving delusions, hallucinations, and disintegration of language, thoughts, emotions, and behavior. Thought, emotion, behavior हो गया, उसका disintegration हो गया, and delusions and hallucinations आ रहे हैं. Symptoms according to DSM-5, there are two different types of symptoms. They are positive and negative symptoms. Positive मतलब कोई कुछ चीज person के life में add हो रही है, plus हो रही है, वैसे कुछ symptoms जो harmful है. Negative मतलब ऐसे कुछ अच्छे symptoms जो होने चाहिए थे, ऐसा कुछ रूटीन चीज बट वो पेशेंट में से निकल रहा है, तो कुछ चीज पॉजिटिव ऐड होना या कुछ निकालना, ये सिम्टम्स होंगे. पॉजिटिव सिम्टम्स, these behaviors are an excess of an addition to the normal thoughts or behaviors of an individual. तो excess में कुछ extra है, कुछ addition है. Like hallucination refers to the false perception in the absence of stimulus. Stimulus है नहीं, फिर भी लगता है पर्सन को कुछ चीज है. अगर आप लोग मुझे देख पा रहे हो तो डेफिनेटली मेरा स्टिमुलस है, मैं प्रेजेंट हूँ. बट अगर मेरे अलावा आपको यहाँ पे आजू बाजू में कुछ चीजें दिख रही है कि यहाँ पे भी और कोई इंसान है, तो बेसिकली आप लोग hallucinate कर रहे हो. It means the individual experiences something even when there is nothing present. Even if there is pin drop silence and yet the individual can hear something, someone talking to him or her, then it is auditory hallucination. Similarly, there are visual, tactile, olfactory, gustatory or maybe related to internal sensations, जिसका hallucination हो सकता है. बिना stimulus के perception feel करना means hallucination. दूसरा पॉजिटिव सिम्टम हो सकता है delusions. Delusions occur when an individual has a belief which is false, but individual is not ready to change it in spite of clear evidence contrary to it. तो कोई false belief है. अगर मैं किसी को समझाऊंगा ये तेरा दोस्त है, तेरे लिए बुरा नहीं चाहता, नहीं, मुझे पता है ना वो मेरे लिए बुरा ही चाहता है, एविडेंस भी दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, still the person is not accepting. That means the person is delusional. For example, they believe that somebody is conspiring to kill me, even when there is no one who is making such plans. और ये बहुत ही एक अच्छा मूवी है, आप लोग डेफिनेटली एग्जाम के बाद देखना, अ ब्यूटीफुल माइंड.
A Beautiful Mind, जिसमें Russell Crowe is the actor. That story is a real life based story on a mathematician who was suffering from this schizophrenia, hallucination, delusions, और फिर भी अपने मैथमेटिक्स की जर्नी को कैसे पूरा कर पाए in spite of such a negative influence. आप लोग मूवी देखोगे ना, आपको समझ में ही नहीं आएगा इनिशियली तो कि ये स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स है, और बाद में यू विल रियलाइज ओके ये उसको ये हैलुसिनेशन हो रहा था, डिल्यूजन हो रहा था. दैट इज व्हाट schizophrenia is, that is split mind. Then there can be disorganized speech and loosening of association. The individual's talk is unrelated to each other, like he or she may use useless words or may jump from one point to the other which has no connection. Then there's disorganized behavior or bizarre movements. The individual behaves in very strange manner, like doing the same act for hours together, screaming without reason, running here and there without any purpose, attacking or biting someone, undressing the clothes in public places. It's all bizarre movements and behavior. Incongruence effect. Here, the emotions expressed by the individual does not match with the situation. That is incongruence. Congruence मतलब जैसा वो express कर रहा है वैसा ही वो act कर रहा है. For example, the individual cries in happy occasions and laughs in sad occasions. तो सोचो किसी की मैयत में कोई हंस रहा है या फिर जहाँ पे खुश होना है वो रो रहा है, तो डेफिनेटली हम सोचेंगे यार ये कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर लग रहा है इसमें. दैट इज इनकॉन्ग्रुएंट इफेक्ट. नेगेटिव सिम्टम्स lead to low levels of functioning, and so the quality of the life deteriorates. Generally, negative symptoms of schizophrenia does not improve much with treatment. ज्यादा फायदा नहीं होता ट्रीटमेंट के साथ. नेगेटिव सिम्टम्स मतलब कुछ चीजें जो चली जाएगी. That is diminished emotional expression. Emotional expression होना चाहिए, diminish हो रहा है. Lack of initiative or enthusiasm, जो होना चाहिए था वो उसकी लाइफ से निकल रहा था. Negative हो रहा है, removal हो रहा है. Diminished and reduced speech and anhedonia. No experience of deep positive emotions. Anhedonia also means lack of interest. Usually depression में होता है और यहाँ पे ये schizophrenia में ही हो रहा है. Person becomes asocial and there is apathy. Sometimes both positive as well as negative symptoms can be seen in schizophrenia. But if positive symptoms are seen for 1 month or longer and negative symptoms are seen for more than 6 months, then the person is diagnosed with having schizophrenia. The positive symptoms कुछ add हो रहा है 1 महीने के या उससे ज्यादा टाइम के लिए तो schizophrenia, और negative symptoms 6 महीने से ज्यादा होने चाहिए. अरे यहाँ पे बोल ही दिया है, जॉन नैश के ऊपर मूवी मैथमेटिशियन, अ ब्यूटीफुल माइंड. मैंने रियली ये नहीं पढ़ा है ये बुक, टेक्स्ट बुक, और जो मैंने सजेस्ट किया वो यहाँ पे आ भी क्या coincidence है. So he was diagnosed with paranoid schizophrenia and how he copes with disorder. So that was done by Russell Crowe, the actor. Now last topic, कैसे हम लोग identify करें, treat करें psychological disorders को. So there are some red flags. So few signal signs that can help one to identify the individuals who may require help of an expert in mental health. That is called as red flags. And red flags जो दिए हैं वो आप लोग जनरल एक बार पढ़ लोगे तो आपको कुछ याद हो जाएंगे. If you carefully study all the symptoms of various disorders, you will realize that there are many symptoms which are common among many disorders. If you find such symptoms in an individual, find out if it satisfies these 3 requirements. First, it should be for a considerably long period of time. Duration जैसे कहीं पे 1 महीना था, 6 महीना था, वो याद रखना है. Second, find if a symptom has become more severe or serious over a period of time. अगर improvement है तो फिर कोई issue नहीं है. Lastly, find if the symptoms has created any problems in the life of the individual or not. If the answer for all 3 is affirmative, it is likely that the sign indicates the beginning or existence of a psychological disorder. Keeping all this consideration in mind, signals indicating need for professional help, inability to concentrate, inability to sleep well, various physical complaints, uncontrollable frequent bad thoughts, too intense uncontrollable negative feelings like sadness, anger, worry, severe confusion, memory loss, ये सब symptoms easy है. Loss of interest in activities and friends, old irrational statements or strange use of words or speaking, and apart from that, self-harm, signs of self-neglect, etc. Another question that immediately follows once you've identified the individual in need of professional help, whether there are any ways such individual can lead to a normal life again. Fortunately, the answer to this question is also affirmatively yes. There are various treatment modalities that can help for different disorders. There are pharmacotherapy, that is drugs, and various psychotherapy techniques like REBT, rational emotive behavior therapy, humanistic therapy, gestalt therapy, interpersonal psychotherapy. ये सब higher students में आप लोग पढ़ोगे, family and couple therapy, etc. And we cannot discuss in detail. जो टेक्स्ट भी बोल रहा है और मैं भी बोल रहा हूँ, मैं नहीं डिस्कस कर सकता, बट हायर जो स्टडीज में कराऊंगा साइकोलॉजी का तो डेफिनेटली ये सब भी डिस्कस करेंगे.
So there are many considerations which are required and several factors beside the line of treatment, and is done by an expert only. Having a mental disorder isn't easy, and it's even harder to accept, yes, I am ill. The hardest of all is when people assume you just can get over it. The fact is you cannot automatically just get over it. You need to work towards the right path to be able to get over it. So yes, it is difficult to accept. तो जो मैंने accept किया, आज भी मैं उसको acknowledge करता हूँ, क्योंकि मैं अगर openly नहीं आ पाऊंगा तो किसी को अगर ऐसा experience है वो भी openly नहीं आ पाएगा. So yes, I have experienced depression, but I have successfully coped it. I have won the battle against depression. So that is why I see things differently. My perspective has changed to see life and the meaning of life. Healing is not automatic. It is a journey that needs to be trodden. तो बहुत ही beautiful statement के साथ ये chapter में final ये चीज end की है. Psychological disorders खत्म होता है, and immediately इस topic के बाद मैं next topic भी upload कर लूँगा अभी बना के. So that's all. Please जो भी future psychologist है, definitely show your appreciation in the form of comments, like and share करें, और comments में definitely सबका पढ़ के बहुत ही अच्छा feel करता हूँ. And yes, that's all from Dipen.